have worked with late Mr. Jethmalani ji. तो उनके साथ आपका work experience कैसा था? How was he like a person? Even at the age of 90, he used to read his own file. I still have few notes handwritten by him. मुझे ये पता चला कि हर lawyer advocate नहीं होता, but हर advocate lawyer होता है. Person who studied law is an advocate. A person who practices law is a lawyer. He Okay. sat at 10 o'clock in the morning and he was sitting in the same chair till 6:30 reading one file. जब आप कोर्ट में जाते हो तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि जो कोर्ट का स्टाफ है या जो आपके ऑफिस का मुंशी है या क्लर्क है वो आपसे ज्यादा जानता है लॉ. कुछ केसेस में हमें पता होता है कि सामने वाली पार्टी गिल्टी है, राइट? दे हैव डन रॉन्ग, बट स्टिल सम लॉयर्स फाइट देयर केस. वो केस ले लेते हैं. Why? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट क्यूरियस शर्मा. आज का पॉडकास्ट है एक क्रिमिनल लॉयर के साथ. नहीं, एक लॉयर जो क्रिमिनल साइड पर प्रैक्टिस करते हैं. इसका कॉन्टेक्स्ट आपको जब आप पॉडकास्ट देखोगे तब समझ आएगा. सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं चिराग मदान. ही इज़ एन एडवोकेट, ही इज़ अ लॉयर लिटिगेशन में एंड ही राइट्स फॉर फोर्ब्स. बहुत ही लर्नड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं. और हमने ड्रीमी चीज़ों के बारे में नहीं बात करें. वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्राउंड रियलिटी दैट हैपेंस इन लॉ. वी हैव टॉक्ड अबाउट रियल थिंग्स. ठीक है, जरूर देखना पॉडकास्ट को शुरू से लेके एंड तक एंड लेट अस नो योर फीडबैक ऑल्सो. आई लव टू रीड योर कमेंट्स. और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. अब भी किसका इंतजार रह गया है? बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इट विल मीन द वर्ल्ड टू अस. थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. So, welcome to the show, Chirag. How are you feeling today? Thank you so much for inviting me to the show. Though I was not feeling well, but after getting on a little better. Right. So, guys, this is the kind of effort that we're trying to put. Chirag sir was not feeling well, but since एक वो पैशन है कि हाँ यार सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है एंड वी वांट टू हेल्प एज मेनी स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स आउट देयर टू गेट क्लैरिटी अबाउट देयर career. So that's why we're doing it. So thanks once again, Chirag, for joining in, even though you were not feeling well. No, it's a pleasure. Right. तो चिराग का इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया होगा दैट ही इज अ क्रिमिनल लॉयर. तो आइए सबसे पहले ही जानते हैं कि चिराग आप हमें बताइए क्रिमिनल लॉयर होता क्या है? First of all, I am a lawyer. I'm not a criminal lawyer. Okay. I don't do any crime. I practice Okay, right. criminal law. I practice Right. on the side of criminal law. So Okay. people who say My bad. criminal lawyer are wrong. I practice Okay. on the criminal branch of law. Right. So basically, what you say, like the general language में बोलते हैं criminal lawyer, we practice on the criminal side. For example, earlier it used to be like murder, rape. Now things have changed. Now there is a separate branch like white collar crimes. You must have heard आजकल PMLA बहुत है, money laundering. Right. Then now NIA has kicked in, which is the National Investigation Agency. So that is the side of criminal law. Right. So मतलब जो लीगल सेंस में जो मतलब अपने इंडिया के लॉ में जो क्राइम है उसका पूरा देखते हैं आप एंड यू हेल्प पीपल not just with murder, rape, etc., but white collar crimes as well, right? Yes, white collar crimes, like I told you PMLA. Now things are starting to FEMA. It's a very vast this. Right. You cannot specify, but generally criminal law will say जिसमें सजा होती है. You have a punishment to go inside. Okay, and वो किसी भी लॉ में हो सकती है. वो किसी भी लॉ में. Right. So since you mentioned starting में कि मैं लॉयर हूँ जो क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करता हूँ. So how criminal side पे प्रैक्टिस करता हूँ. So how does one pick their specialization? वो कैसे पता चलता है कि यार मुझे इस साइड इंटरेस्ट आ रहा है? वो स्टार्टिंग में ही करियर में कैसे फिगर आउट कर सकता है कोई? It is very difficult starting में to figure it out because I would always advise that one person who is joined the profession of law should practice on all sides so that he gets a flavor of everything and then decide to expertise in which branch of law. Sometimes you think that you are good at X,
then when you practice on that side, you realize कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता. For example, when I joined the profession, I wanted to go on the corporate side, but I never liked it. But when I started to do criminal law, my interest started to develop. So it comes with time. It takes its own time. You cannot say that there is a shortcut to analyze कि मेरे को यही करना है. You should try everything, and whatever you are good at, then you do that. ओके. एंड आपके हिसाब से कितना टाइम किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू डू प्रीटी मच एवरीथिंग कि समझ आ जाए? कितने टाइम के बाद वो डिसीजन लेना चाहिए? See, I think 3 to 4 years minimum. Okay. You should actually, to do that, you should choose an office or a senior who has all types of work. For example, if you join an office where there is only arbitration or only criminal law, then you will not get that kind of exposure. And I would also suggest that students who are doing law should intern in different offices, so that you actually, what happens is you get to learn a number of things, and then whatever you like, you can adapt that. Right. The other day I was speaking to another lawyer and he mentioned that starting में सारा ही काम करना पड़ता है, but कोई बड़ा केस फंस गया and it happens to be in your favor, so people start of kind of spread the word, and वो word of mouth marketing से you start getting those and those particular assignments, जिसकी वजह से आपका फिर नाम उसी में बन जाता है, but pretty much you can do everything. Yes. See, that is what I'm saying. You do everything, but once you start developing that interest, people tend to know you from that. For example, now during COVID, सब खाली बैठे हुए थे. So I had filed this PIL. Now that PIL was very interesting. It was a very small issue, but it helped a number of lawyers. Today also, somebody who doesn't know me or meets me and gets to know my name, he says, "अरे आप हो वो." उस judgment को मैंने बहुत use किया है. So that judgment was that PIL was basically what was happening when you file a bail application. The state or the police responds to that and files a report. Okay. So that report was not being given to the accused persons. Okay. So generally, when we were physically present in court, we would request the public prosecutor or the judge that let me see that report, and then we can respond accordingly, because bail is a matter of liberty. So during COVID, what was happening? Those reports were directly being filed in court. Physically, you were not present. Right. So everything going virtually. So with me, 2-3 times this happened that the judge wrote, "I have perused the report and so order has been passed." So I filed a PIL that this, in order to get justice, everybody should get these things. So we filed a PIL, and then we got the order very same day, and that has become a precedent now in Delhi. That whenever you file a bail application or whenever you file any such thing, any reply, until unless you can show that it is not to become to the other side. For example, it is a terrorist activity or very secretive act, something which cannot be revealed at this stage. And तब तक उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि you cannot provide it. So that report has to be given. Right. So जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला PIL, तो आप बस थोड़ा ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए कि PIL होता क्या है? See, PIL is public interest litigation. जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए है. Because when I filed this, it was not for my own personal benefit. It was for the benefit of the public at large. Right. पर हर accused का राइट था, तो सबको वो मिलना चाहिए. So basically that is PIL, which is done in the interest of the public. Right. So मतलब जैसे अगेन आप मेंशन करते हो whenever you meet new people and you kind of do bring up this PIL वाला issue, people instantly relate to it, right? तो मतलब आप क्या आप सजेस्ट करते हो कि अपने करियर में whenever you find any issue, even though चाहे वो आपके काम को directly affect भी नहीं कर रहा है, you should sort of pursue it? Is that what you're trying to imply? Yeah, you should definitely. Sometimes I have done other PILs also. For example, my senior, late Mr. Ram Jethmalani, also filed a PIL on black money. It was not for his interest; it was for the whole nation. So whenever, even if you are not in that branch of law, even you as a petitioner or as a citizen of this country can go and file a PIL, but that requires very extensive research. Right. It has to be backed up by logic.
लाइक फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव रेड, अभी किसी ने पीआईएल डाल दी थी कि इंडिया का नाम ऐसे कर दो, चेंज कैसे कर दिया एंड ऑल दैट फॉर दैट पॉलिटिकल पार्टी, सो दैट इज नॉट मेंटेनेबल एंड ऑल. We should हम्म have some topic. People because of social media now are filing frivolous PILs कि हम्म नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा. So you can definitely file, but it has to have some basis. राइट. आपने मेंशन करा कि आप स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट में गए थे, पर आपको कॉर्पोरेट नहीं पसंद आया, राइट? No. सो कुड यू डिफाइन द कॉर्पोरेट कल्चर इन लीगल फील्ड फॉर अस? See, corporate culture, like I mentioned in the starting, people should intern at various offices, different offices to gain exposure. हम्म. So I was interning at a tier one law firm. हम्म. I don't want to name the law firm. I was interning. So the culture and everything was totally different. ओके. Like, for example, in a on the chamber side or on a chamber side, you are a little informal. वहाँ पे बहुत formalities होती हैं. Then you have a lot of pressure. ये करो वो करो, and it is a very formal structure, which I personally didn't like. And the interest which you develop, which I developed on the criminal side, was different. हम्म. Corporate में क्या है, merger है, acquisition है, they give you paperwork, which I didn't like. With under this litigation and all, you interact with people, you see how people have used their minds to commit fraud or scams. हम्म. So that is very interesting. हम्म. राइट. सो कॉर्पोरेट में मतलब कंपनीज के अराउंड ज्यादा रहते हैं केसेस, जैसे आपने. कंपनीज के अराउंड ज्यादा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं. हम्म. देन मर्जर्स देखो, तो हम्म. वो थोड़ा उस साइड पे है. इट इज मोर, आई फील, अ लिटिल academic, राइट. more of academic. And on the when you practice in courts, it's academic as well as practical. राइट. And to be very personally, वो लॉयर वाली फीलिंग नहीं आती कॉर्पोरेट साइड पे. राइट. 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 ओके. यू गो टू कोर्ट ऑल्सो लेस. हाँ, वो फिर ऑब्वियसली बिकॉज आपका मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डील्स करवाने में, मर्जर्स कराने में जा रहा है तो. हाँ, so you're sitting in the boardroom or in an office, but हम्म. when you go on in courts, you get the exposure of both the sides. You get more practical knowledge how people are, what is going on actually in the world. लाइक वो क्या बोलते हैं, एकदम लोगों से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है लॉ, अगर हाँ, हम. लोगों से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली. So you have to interact with different kinds of people. You get to learn a lot in your personal life also with that, कि अरे ये ऐसे होगा वैसे होगा. You with that experience, you in 10-15 minutes you get to know कि ये कैसा होगा बंदा. So it's like your psychological development is also very mature in that sense. Definitely. So आपके हिसाब से like you having 10 years of experience and you have had multiple interns working under you also, तो आपके हिसाब से किस टाइप के स्टूडेंट्स को या लोगों को कॉर्पोरेट साइड नहीं जमेगा? जैसे एवरीबडी हैज अ पर्सनालिटी, वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होती हैं, तो आपके हिसाब से किसको कॉर्पोरेट नहीं जमेगा? A person who cannot sit for hours ओके. in an office or in one place. हम्म. with corporate में है कि आप वहां बैठे रहते हो. litigation chamber में you keep running from one court to the other. हम्म. Then you keep meeting people. So a person who likes to socialize more, I think, should be in litigation. And who likes to socialize less, या जिसको लगता है कि यार I just need a job and want to be secure. See, हम्म. everybody has their own ambitions. For हम्म. example, I had a junior who he wanted कि बस मेरे को इतने पैसे कमाने और कुछ नहीं चाहिए. अच्छा. लाइफ में मेरे को आराम से इतना पैसा कमाना है और मेरे को ऐसे ही रहना है. आई हाँ. डोंट वांट टू ग्रो. मैं अपना 9 to 6 ऑफिस जाऊं या ऐसे करूं. हम्म. सो इट डिपेंड्स. आई कैन नॉट कमेंट कि किसको क्या पसंद आएगा, बट आई फील कॉर्पोरेट इज अ मोर सिटिंग जॉब. हम्म. मे बी कॉर्पोरेट लॉयर्स माइट डिफर विद मी, बट हम्म. दिस इज माई इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इट इज मोर ऑफ अ सिटिंग जॉब एंड हम्म. लेस मीटिंग ऑफ पीपल. For example, in litigation, you meet different sorts. You cannot even imagine. You will meet a rickshaw wala also. You will meet the prime minister also. But हम्म. in corporate, you will have that balance कि हाँ ये इस लेवल का ही बंदा आएगा. हाँ, 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 हाँ. एक स्पेसिफिक टाइप की जेंट्री है जिसके साथ आपको Yes, इंटरेक्ट करना है. जिसके साथ आपको इंटरेक्ट करना है. राइट. और लिटिगेशन के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि लिटिगेशन में
क्या क्या नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है, एंड व्हाई इज दिस एन एक्साइटिंग फील्ड? सी, लिटिगेशन में क्या क्या करने को मिल सकती है, आई कैन नॉट इवन टेल, एक्सप्रेस और टेल, क्योंकि एवरी डे समथिंग न्यू इज देयर. हम्म टुडे इवन इफ अ पर्सन हु हैज 50 years of experience will experience something new tomorrow in court. हम्म He cannot predict कि कल ऐसा होगा या वैसा होगा. Because see, I read this quote which I found very interesting, हाँ that there is a, for lawyers especially, it said कि there is a lawyer who gets up every day to do his job. This is for the prosecutor side, and there is, for the defense side, there is a lawyer who stops the prosecutor from doing his job. So it is both ways. एक बंदा काम करने आ रहा है, दूसरा बंदा उसे वही काम करने से रोक रहा है. करेक्ट तो इसमें क्या है कि लिटिगेशन में यू विल गेट बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस मिलेंगे. आपका जज के साथ एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका कोर्ट स्टाफ के साथ एक्सपीरियंस अलग होगा, हम्म आपका क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका जो अपोजिंग लॉ है उसके साथ एक्सपीरियंस अलग होगा. फॉर हम्म एग्जाम्पल, फ्यू ऑफ माई कॉलीग्स हु वी वर्क टुगेदर समटाइम्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड. तो वी फील हम्म यार अभी ही विल प्ले सम न्यू ट्रिक नाउ जो हमें भी नहीं पता होगी. राइट फॉर एग्जाम्पल, एडजर्नमेंट लेनी होती है, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू टेक एडजर्नमेंट. हम्म अब वो क्या किस ग्राउंड पे लेगा क्या लेगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. करेक्ट सो लिटिगेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. राइट. आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर वेरी न्यू टू दिस लॉ फील्ड, जिनको बस अभी जानना है कि लॉ फील्ड में क्या क्या होता है, आप लिटिगेशन का भी मतलब समझा दे कि लिटिगेशन में एक्चुअली होता क्या है. लाइक Litigation, व्हाट इज दिस जॉब लुक लाइक? see, litigation is basically going to the court and fighting cases. ओके. Litigation, litigants होते हैं, दो पार्टीज हैं जो लड़ रही हैं. वो हम्म क्रिमिनल साइड हो, सिविल साइड हो, हम्म उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लिटिगेशन इज बेसिकली कोर्ट में जाकर आप केसेस लड़ रहे हैं. ओके. राइट. और किस किस टाइप के, like I mentioned, I was talking to a lawyer the other day. So he told me that लॉ फील्ड में एडवोकेट अलग है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एडवोकेट ही बन सकते हो. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू इवन आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ. तो वो सारी चीजों पे इफ यू कुड जस्ट टच अपॉन दोज थिंग्स दैट अ पर्सन कैन गेट इनटू आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ. See, after completing law, a person can get into a number of things. One, for example, एक तो lawyer हो गया, practice in court. You can be a teacher. For that, though you have to do LLM and all, you can become a judge. You can ओके. become a mediator, counselor. फिर you must have heard the terms in-house counsel. हम्म. जो एक कंपनी के ही लॉयर होते हैं, so they look after that those cases only. ओके. So these are the basic. For example, अब people are started to go towards JAG, which is Judge Advocate General. अच्छा. This is generally for the army, because they have other. तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स खुल जाते हैं. इट इज नॉट कि दैट अगर आपने लॉ कर ली तो सिर्फ आप लॉयर ही बन सकते हो. राइट. ठीक है. एंड लॉयर में भी मुझे ये पता चला कि एडवोकेट, हर लॉयर एडवोकेट नहीं होता, बट हर एडवोकेट लॉयर होता है. वो पर्सन हु स्टडीड लॉ इज एन एडवोकेट, अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ इज अ लॉयर. तो देयरफॉर जो लॉ पढ़ चुका है वो एडवोकेट है, जो प्रैक्टिस कर रहा है वो लॉयर है. ओके. ओके. सो कोर्ट में जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी एडवोकेट ही बुलाते हैं? एडवोकेट ही बुलाते हैं. दिस इज अ जेनरिक टर्म जो लोगों ने थोड़ा वो कर दिया, बट everywhere, even if you look at judgments, so it is already learned advocate हम्म or learned counsel. ओके. ओके. राइट. सो थोड़ा सा आपके जो इतनी रिच वर्क एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं. आपने अपने लिंक्डइन पे मेंशन करा हुआ है दैट यू हैव वर्कड विद लेट मिस्टर जेठमलानी जी. तो उनके साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वाज ही लाइक अ पर्सन? See, थोड़ा सा. everybody, first day when I met him, when I joined him, I was also scared, but he's the one of the most best humans I've ever met in life, to be very honest. ओके. Best human being I've ever met in my whole life till now. दैट्स अ बिग And स्टेटमेंट. work, you can take it, I can give you an affidavit. No, I want to listen With more him, about him. I'm with curious him, to listen. with him, the experience was totally different. Hmm. I have briefed many seniors, but working with him,
very closely was very different. Like he was a old school man. हम्म उनको उनको चार जूनियर्स नहीं चाहिए बताने के लिए कि सर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है. He will read his own file. Even at the age of 90, he used to read his own file. I still have few notes handwritten by him. His own notes which are handwritten. It is not कि टाइप करना है और या आप बना के दोगे. अगर आप बना के भी दोगे तो वो खुद बनाएंगे. With हम्म him, I learned that every page of the file, even though it may be somebody's affidavit, is important. हम्म He was such a person जो affidavit में गलती निकाल के बोलेंगे कि देखो affidavit ही गलत है तो how is it maintainable. राइट With him I remember I had worked on this Mr. Arun Jaitley's defamation case versus हम्म Mr. Kejriwal. हम्म That time he pinpointed even if there was a fault in the small what do you call, there is an urgent application which is a हम्म formal application which goes into the court. हम्म उन्होंने उसमें भी fault निकाल दी थी कि this is defective. So with हम्म him the experience was totally different. हम्म He'll make sure that you know each and every page of the file, so that when you go to court, you can defend your client to the best of your ability. Then, मतलब I- even at the age of 90, he was with such precision and such presence of mind. I think that's commendable. I'll share a personal experience with you. When I had joined him, हाँ. so I that time never knew that he had stopped having lunch. He Oh. sat at 10 o'clock in the morning and he was sitting in the same chair till 6:30 reading one file. And I was embarrassed because I, after half an hour or every 45 minutes, had to go out. कि that I am tired. अब मैं कुछ खा लेता हूँ. I have to go to the washroom. या phone आ गया. And you have to. His concentration level was such that even if the phone was ringing next to him, you have to tell him, "Sir, the phone is ringing." That was his concentration level. Damn. And आज के डेट में तो इस लेवल का कंसंट्रेशन डेवलप करना मतलब इम्पॉसिबल ही हो गया इन द एज ऑफ Impossible. सोशल मीडिया. Impossible. हम्म Impossible. राइट. With तो him only, I learned sitting for hours. Then you start developing that. हम्म But राइट. when first time when I was doing, I was ashamed कि यार how is this possible that he is sitting there and I have to get up every half an hour. हम्म राइट. Any sweet memory you have of him? So there are many. Today whatever Like I you're am one is of the because of him. sweetest. I can't pinpoint, but today whatever I am because of him. That much I can say. Hmm. Wherever little I am, it is just because of him. Hmm. So, can you also share like top 3 learnings from his life that can help other students who are pursuing law as a profession? तो अगर आप थोड़ा सा बता सको तो. The first thing which I mentioned, I learned from him only that always don't specialize in any branch of law. Hmm. Practice in all kinds of law. Okay. One, two, you have to like meditate or do some physical exercise to maintain your mental balance. That is very important today. Nobody talks about it. As my fellow lawyers and everybody will agree that lawyers need to talk about mental health now Hmm. because they are working for hours and hours. And third thing which she personally taught me was that if you can make anybody smile, please do that. Even if he is not going to help you back. Okay. That's so So sweet. I mean, basically he meant that if you can help anyone, just do it. Don't be selfish. Just do that. If you can make somebody smile, just make them smile. hmm. I mean, it's so good to know that he had this side क्योंकि हमने तो सुना ना लॉयर्स बड़े रूथलेस होते हैं और जैसे उनकी भी पर्सनालिटी को ऐसे ही परसीव किया जाता था कि बड़े रूथलेस That होते हैं हर I know, चीज I पे. know, हम्म I know. If you would have in life, you met him on that is see that is a media perception. वो टीवी पे आता है. टीवी पे obviously he's defending his client in personal life or otherwise. If you go, even if you are his enemy, he'll help you. He was that kind of a man. that's so amazing actually. Right. थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं अपनी कॉन्वर्जेशन को. आई एम श्योर लाइक सर से मिलने के बाद, जेठमलानी सर से मिलने के बाद आपका
जो लॉ में इंटरेस्ट है वो और डीप हो गया होगा. बट देन हाउ इट ऑल स्टार्टेड? लॉ में इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ? कैसे सोचा कि यार मुझे लॉ पढ़ना चाहिए? See, I'll tell you, basically, when I was in school, all my friends chose science. So, ओके. being under peer pressure and everything, I also chose science. Then, after like 11th mid session, I realized कि यार, I don't want to do this. I have to study so much and this all. I always like when I was in 7th grade, I always wanted to be a lawyer. कि मेरे को law करना है, law करना है, law करना है. So then I started to say कि चलो I'll do that. Even in fact, I'm grateful that my parents supported me. And my teachers in the school said that you do law, but stay with science. You start preparing for your law and all. But I prepared end moment, and I always had that side to do law, and I just followed it. राइट. सो आई थिंक आपने 2008 में स्टार्ट किया था अपना लॉ. 2008 I had taken admission, and then 13 I graduated. And I think 2008 was the first batch of CLAT. No, I didn't do from CLAT. I did it from a private university. I did it Okay. from Haryana. ओके. राइट. आज तो आई थिंक पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं विद द ऑनसेट ऑफ मतलब क्लैट जब से आया है, एंड इट हैज बिकम सो मच मोर कॉम्पिटिटिव. Yeah, everything is now changed. Now CLAT, everything is, or so many OP Jindal University has come up that time. I think it was the first batch when I had started. Now there are n number of universities now, and at that point of time, everybody now. What I personally feel is it doesn't matter which university or which that. If you want to do law, if you will follow your passion, you will end up somewhere good only. राइट. सो मतलब अब जो क्लास 11th वाला जिसे साइंस ली थी वो बिल्कुल भी मतलब रिग्रेट नहीं करता है कि अल्टीमेटली यू गॉट. नहीं. No, I don't regret. I don't regret. And what I am just going to share with you was that if you remember this Opar cinema tragedy that happened. Okay. On TV, I saw that news, and 20 years later, I was defending those clients with Ram sir. Just imagine. Yeah. And like you know, जैसे वो whole circle completion वाला कि यार something that I watched on TV and now today I am. Now today I am standing there doing Yeah. that, defending those people in that same very case. Right. That absolutely feels wonderful. क्योंकि आई थिंक लॉ का जो प्रोफेशन है ना वो द सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट यू गाइस गेट आई थिंक काफी बढ़िया है. आपको रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट दिखता है अपने काम का. डिसीजन आई फेवर में, जस्टिस मिला, चेंज आया, लाइक यू मेंशन कि आपने PIL फाइल किया एंड देन पीपल स्टार्टेड गेटिंग दैट, राइट? सो इट्स सो इम्पैक्टफुल एंड सो रियलिस्टिक. That is there. That is there. When you see those results, when you see that you are making some difference, then you feel good. कि चलो वो 11th क्लास का रिग्रेट बिल्कुल नहीं है. राइट. सो ठीक है, ये तो गुड पार्ट हो गया. लाइक व्हाट आर द बैड पार्ट्स ऑफ परस्यूइंग लॉ, स्पेशली व्हेन यू वर इन कॉलेज? तो कॉलेज में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि हाँ यार दिस इज व्हाट आई एम गोना फेस एंड आई शुड बी रेडी फॉर इट. College say what challenges you face are number one. I suggest that if you don't intern or if you don't study at that point of time, you're going to face a huge trouble when you join the profession. Okay. With me, luckily, I started interning in my third year, and I did about I think 10 or 11 internships. That helped me a long way because in the first year of law, touchwood, my first senior, Mr. Ashok Soni, when I graduated, I graduated on 5th. On the 6th, he handed over me a case कि बेटा अब तुम जाओ और ये केस तुम्हारा, अब तुम करो. So that was a leap over other people. Correct. जिसने Yeah. internship नहीं करी, जिसने पढ़ा नहीं, I am already 1.5 years ahead of you. By Right. the time you start learning, I'll again be 1.5 years ahead of you. Right. By the Yeah, time so, like everybody else yeah, graduated, you were already like handling your first case individually. yes. In fact, when I was interning with him, the judge used to see me every day. So he recognized me. Then he said, "अरे, Soni साहब, अब से आप कोर्ट नहीं आएंगे. He will only do all the cases in this court." So then you get that encouragement from the judges also that who is seeing you every day. They know that you are working. Yeah. So one thing is, yeah, you should always intern.
बैड पार्ट्स आर बट द प्रॉब्लम इज कॉलेजेस में अटेंडेंस इश्यूज होते हैं. Yeah. So you have to, I would suggest students to manage that. Second, I would suggest them that if you want to really want to do even practice or not practice, judiciary की तैयारी करो, because that gives you a lot of knowledge. It will Okay. never go waste. Okay. I have seen people, they decide at the end moment कि मेरे को नहीं फिफ्थ ईयर में अब मेरे को जुडिशरी की तैयारी करनी है, ये करना है. So I think you should start a little early Okay. so that you are hand in hand with the world when you enter the profession. Even if you don't want to do it, it will help you in the profession also. Otherwise आपके कॉलेज में एग्जाम्स होंगे, कुछ भी होगा, it will help you there also. Right. And by judiciary you mean कि जज बनने की तैयारी जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं. I mean हाँ, just setting जज it. बनने की तैयारी. Hmm. Generally after graduating you can appear for judicial services exam. Okay. दिल्ली में अलग अलग, हर जगह के अलग अलग होते हैं. So you can apply for that and you can directly become a judge. And like you start with पहले छोटे कोर्ट से and then gradually you can हाँ, climb up यहाँ the law. जैसे फॉर एग्जाम्पल you start from in Delhi, you start as a metropolitan magistrate Okay. and then you climb up the hierarchy. Okay. Okay. तो एग्जाम कैसा होता है जुडिशरी का? बहुत टफ होता है या निकाल लेते हैं लोग? I mean, I never wanted to be a judge, तो मैंने कभी दिया नहीं. But I know people who have interned with me or have been there, they have cracked those. So अगर पढ़ा होगा तो it's not a big deal. Okay. पढ़ा Few होगा of my मतलब. friends are also. हाँ, if you prepare that, तो फिर it's not that tough. I think Main, that is the leap you get. जो बंदा पहले से कर रहा होगा तैयारी, if you have studied for 6 months and I have studied for 2 years, there will always be a difference. correct. And I think जो आपने बोला कि पढ़ोगे तो आसानी लगेगा, that's applicable for pretty much everything you do. कुछ भी करो अच्छे से. Everything. Yeah, so I was just saying कि अच्छे से प्रिपेयर करोगे, किसी भी चीज में अपना 100% दोगे तो डेफिनेटली सक्सेस तो उसमें आएगी. Ultimately, I say if you don't succeed also, that all your studies will help you in the profession also. जब आप लॉ प्रैक्टिस करोगे, लॉ तो सेम ही है, तब आपको काम आ जाएगा. करेक्ट. It is नॉलेज. not that it is going to go waste. It is not going to go waste ever. मैं यही बोलने वाली थी, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. लेट्स मूव अ लिटिल अहेड. थोड़ा सा when you started off your career and you started handling the cases individually, तो तब आपको जब आपने मतलब केसेस हैंडल करे, व्हाट वाज द सरप्राइजिंग थिंग टू यू कि यार ऐसा भी होता है, मुझे पता ही नहीं था. सो टेल अस अ लिटिल सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट द लॉ फील्ड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, जो कि पता नहीं होता स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज में होते हो. See, when you start working, पहले to be honest, जब हम कॉलेज से निकलते हैं, इनफैक्ट लाइफ में भी ऐसी होता है कि बस अब तो मैंने पढ़ लिया, अब तो मैं सबसे फाड़ लॉयर बन जाऊंगा, अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मैं ही हूँ. फिर देन यू गेट अ रियलिटी चेक. जब आप कोर्ट में जाते हो, तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि जो कोर्ट का स्टाफ है या जो आपके ऑफिस का मुंशी है या क्लर्क है, वो आपसे ज्यादा जानता है लॉ. Oh, That okay. is a reality check. Today also, there are clerks who know better than lawyers because they have been in the profession for so long, and that you are sometimes not able to take. I have seen people, अरे वो क्लर्क है, वो मुझे क्या बता रहा है, but you should appreciate that they have given so much time and they are trying to make you learn. That is the first reality check. वहां पे आप जाओगे तो you think you know everything. आप अभी पढ़ के आए हो. The person who is, even if an opponent comes when you enter the profession, he has been there for 10 years. For example, if you take me, even if I have not studied that case, but I know the law. I know the law 10 years far better than you. So that time you get a reality check कि you should मैं judgments पढूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं. That is the first reality check which you get to know. कि यार it is not that easy. मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं ये बोलूंगा, हो जाएगा. जज ही तुमसे 4 सवाल करेगा, तुम वहीं पे बैठ जाता, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. राइट. आई थिंक जैसे आपने ये बात बोली ना कि जज आपसे 4 सवाल पूछो और आपने सोचा नहीं. लॉ ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको पहले इवन बिफोर गोइंग टू द कोर्ट, आपको खुद पहले अपने आप को हराने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या क्या सवाल मुझसे ओपोनेंट पूछ सकता है. आई थिंक दैट्स द
कि अपना खुद का ही डेविल्स Correct. एडवोकेट बनना है. Devil's advocate. I was going to use that term. You have to become a devil's advocate कि यार सामने से क्या आ सकता है. हम्म. Whenever a client also comes to me, हाँ. तो once a client said, सर आप मेरे को डिफेंड करना चाहते हो मेरे को हराना चाहते हो. मैंने कहा कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि आगे से क्या हो सकता है. व्हाट इज द आंसर टू दिस. हम्म. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिकॉज द अदर साइड विल नो कि तुम ये बोलने वाले हो. तुम्हें ये भी तो पता नहीं चाहिए कि वो तुम्हारे अगेंस्ट क्या बोलने वाले हैं और तुम उसका क्या जवाब दोगे. करेक्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. And when you enter this profession, after some time, you start thinking 4 steps ahead yourself. हम्म. राइट. Be it your personal life or professional life, you start thinking 4 steps ahead. कि अब ये होगा तो ऐसे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है. हम्म. एंड आई थिंक लॉ लाइक नॉट जस्ट फॉर योर प्रोफेशनल बट आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी काफी अच्छे से प्रिपेयर कर देता है. हाँ कर देता है. कई लोग जैसे आई नो फ्यू फ्रेंड्स लाइक समबडी आस्क्ड मी बोले व्हाई डोंट यू गेट मैरिड. मैंने कहा हाँ. नहीं मैंने कोर्ट ज्यादा देख ली है. देयर वाज दिस गाय. दिस इज आई एम शेयरिंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस. हम्म. So there was this guy, like I will not name the lawyer. So he had that time a dowry case had been filed against his client, हम्म. and they had applied for anticipatory bail. So हम्म. his senior said to the judge, सर अगर आज आपने बेल नहीं दी तो ये शादी नहीं करेगा. ये बोल चुका है कि अगर ऐसे होता तो मेरे को शादी नहीं करनी. दिस इज अ रियल लाइफ. एंड जज सेड चलो ठीक है मैं इंटरिम प्रोटेक्शन तो दे देता हूँ नेक्स्ट डेट तक. अरे It बाप रे. happened. It actually happened. हे I am भगवान. talking about 2014-13. हम्म. आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती होंगी आपके साथ लॉ के फील्ड में विद द जजेस एज यू मेंशन्ड स्टार्टिंग में भी हर किसी के साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं. राइट. Yeah, everybody, yeah, everybody. That I'm telling you, even the you get to learn from the court staff, clerks, everybody. You will get to even if being 10 years into a profession. Sometimes you learn from your juniors हम्म. because everybody has a different mindset, या. and I feel it is nothing to be like ashamed or something. You can learn from your juniors also. हम्म. Everybody has their own mindset. जो तुम्हें अच्छा लगे, you adapt that. या. आई थिंक वो आपको उतना ओपन माइंडेड तो रहना पड़ेगा कि जूनियर्स भी कुछ अच्छे पॉइंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड दैट्स व्हेन यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी कि चलो अब आप लीड This करो. is one of the things. This is one of the things which I learned with Ram sir. अच्छा. See, when I was working with him, he हम्म. he he was he was a living legend. Even हम्म. if you give some suggestion, no, he will never just wipe you off. He will listen to you, understand what you're trying to say, and if he feels, he will definitely adapt that. He will put it in his argument. हम्म. That कितना मतलब अपनी टीम मेंबर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का दिस इज सच अ नाइस वे टू Yes, yes, शोकेस definitely, कि दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस केस. absolutely. And then your self confidence also boosts. Here, I had given the suggestion, and he is incorporated. Court में बोला, and court has agreed also. हम्म. दैट्स नाइस. So, do you, what is the what is your favorite case that you fought and won? Like, ये मेरा favorite case ये है अभी तक आज तक. I know there are more to come, but till now, in this like 10 years of journey, what has been your favorite case that you fought and won? See, one of the cases which my Ram sir had told me to do it is still going on. That is one of my favorite cases, and that has given me a lot of opportunities and a lot of exposure in life. Mm-hmm. That is the Antrix Devas scam. Okay. That is one of my favorite cases. It is still going on though, but Hmm. it has given me a lot of exposure and lot of recognition. Okay, okay. Would you like to share the details only if they are available in public domain? Because no, right now the case is going on, so I don't want Okay. to share the details and all. ठीक है, no worries, no worries. Right. कोई वियर्ड केस का किस्सा आप सुनाना चाहेंगे? कोई मतलब कि यार ये क्या केस है समझ नहीं आ रहा पर ठीक है लड़ना पड़ेगा. आया है केस तो. See, one of the most pivot, like there are many weird cases. One of this was there was a divorce case. है. Actually, there was no issue between the husband and wife. They were not compatible. Okay. So I was arguing in court. Hmm. So I was for the husband, and he kept on pulling me and murmuring something in this. So I just ignored it. So the judge stopped me. बोलो क्या बोलना चाहते हो? Okay. तो
बोले कि आप, बोले मैंने वकील साहब को बोल दिया, लाइक इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस, सो हिंदी वाज, तो बोले नहीं नहीं बताओ, आई सेड नथिंग सर, तो बोले नहीं नहीं बताओ, कह रहे सर मेरे को ना इससे इसलिए नहीं, क्योंकि ये भूतिया है, इसके अंदर भूत आता है। एंड द जज स्टार्टेड टू लाफ। सो दैट इज व्हाई आई विल नॉट से, इसके अंदर भूत आता है, ये भूत बुलाती नहीं तो। Oh my God. लाइक इट वाज सो वियर्ड, एंड द जज वाज लाफिंग, एवरीबॉडी वाज लाफिंग इन द कोर्ट, व्हाट इज ही सेइंग। तो So फिर that was one of the most weird moments. फिर We वर्डिक्ट had to क्या निकला? ignore it. Ultimately, we made them compromise and they took a divorce. But it was इमेजिन. one of the most weird moments. कह रहे कि भूती, कि नहीं ये भूती औरत है, ये भूत बुलाती है, भूत है इसमें, नहीं तो कुछ ना कुछ करती है भूतों से। Oh my And God. open court में people are sitting, everybody is laughing. Damn. Was the wife also there? Yes, yes, she was also there. Family courts are the, if you want to see, like, people mentally they get so traumatized, they are fighting outside the courts, literally fighting. Oh. Hmm. I That think was one of the most, कि भूत आ गया, भूत बुला लेगी। so. मतलब कोई मेंटल हेल्थ इशू होगा, या फिर उसको या तो पति को होगा या बीवी को होगा, which was obviously मतलब पता नहीं लग पाया होगा. होपफुली अब किसी को नहीं है, दोनों अलग हो गए हैं। ओके, मे बी साथ रहने से हो रहा होगा. Exactly. The mental issues was because of both of them being together. Yeah. Okay. So, you have been a part of like lot of courtrooms. हम मूवीज में देखते हैं, जैसे जज साहब वो बोलते हैं ना, लॉयर्स बोलते हैं, जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें. That तो is from a comedy series which is कि जज जुबान से पोछा लगवा देगा, फाड़ दीजिए कानून की किताब। That ऐसा. is from some comic this. ओके ओके ओके. तो रियल लाइफ में ऐसा होता है? आई मीन आस्किंग जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर द ऑडियंस कि भाई रियल लाइफ कोर्ट्स कैसे होते हैं, इतना ड्रामा चलता है वहां पे? That com No, no. Sometimes it might be there, but with nobody will misbehave to the judge so easily and all. हम्म. The judges also understand, they are also trained, they know the human nature कि, see, a person who is litigating for 10 years, जो 10 साल से केस लड़ रहा है, वो mentally थोड़ा upset हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। But हम्म. ऐसा होता है, but it's not very often. होता है, हम्म. but it's not that often. ओके ओके. राइट. सो एक मॉरल क्वेश्चन पूछना है. टेल मी ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल आंसरिंग इट. जैसे कुछ केसेस में हमें पता होता है कि सामने वाली पार्टी गिल्टी है, राइट, दे हैव डन रॉन्ग, बट स्टिल सम लॉयर्स फाइट देयर केस, वो केस ले लेते हैं. व्हाई? व्हाट इज द मोटिवेशन We are बिहाइंड bound by law. टेकिंग? No, we are bound by law. Under the Advocates Act, if we feel our client is guilty and we are guilty of professional misconduct. नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा अगर सा हम और. वो, हम्म. see, आप कह रहे हो कि आपको पता है कि सामने वाली पार्टी गिल्टी है और फिर भी हम केस ले लेते हैं। हाँ. You are saying this, no? या. जो, there is an act, Advocates Act. हम्म. Under that act, you are bound to defend your client whether you feel he is guilty or not. And if you don't do it, you are guilty of professional misconduct. ओह रियली? And this is there. That is why people defend. हम्म. ओके. मतलब जैसे बहुत फेमस केस है निर्भया का जो केस था, उसमें भी लाइक उसके Hmm. अगेंस्ट में लॉयर खड़े थे, राइट, And इवन and दो वी and क्लियरली ultimately, न्यू. हम्म. ultimately, I'll tell you just what you're saying also. Otherwise, हम्म. अगर if you don't get, if suppose कर लो कि कोई lawyer defend नहीं कर रहा, हम्म. then the court will appoint a lawyer, जिसको हम्म. legal aid भी कहते हैं कई बारी. You might have heard the name amicus curiae, friend of court. Court appoint कर देती lawyer कि that हम्म. to give the other person, because everybody is a right to defend themselves. तो हम्म. उसको defend करने के लिए court दे देती है. Now हम्म. what will you say to that? अब कोर्ट ने आपको अपॉइंट करा है, हम्म. करेक्ट. एंड and कोर्ट. there are legal aid lawyers also. Then हम्म. there are legal aid lawyers, या तो legal aid lawyer मिल जाएगा आपको, या कोर्ट कोई lawyer अपॉइंट कर देगी. मतलब हर किसी ये मतलब लॉ की नजर में हर किसी के पास अपना वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो सबको मिलना चाहिए, अपना केस सामने सबको रखने मिलता है. का जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको मिलना चाहिए.
सबको मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी। That is something तभी like तो वो तराजू really तराजू पकड़ा होता है ऐसे। right. That is interesting because हमें तो लगा था कि we being outsiders, not part of this law community, right? हमें तो ऐसा लगता है कि मे बी पैसों के चक्कर में ले लेते होंगे, पैसा तो मिल ही रहा है केस लड़ने का, so we thought money was the motivation. नहीं, see, I have done cases pro bono where I know the client is guilty. Oh, okay. Somebody will ultimately defend them, and we are bound by the Advocates Act. I am otherwise guilty of professional misconduct. आप जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स से मिले होंगे. Have you met people like who have committed murders and like have been accused of rapes, etc.? Yes, I have met. I have in the starting of my career. In fact, today also I have few clients who are accused of murder or rape. Is it easy to identify such people? Are there any specific characteristics that you look for? या फिर कुछ समझ आता है या फिर पूरा With experience, you start understanding कि actually what has happened. Is he a victim or is he actually an accused? Has he actually done it or not? With time, you learn that. That comes with experience. And movies में तो जैसे Sometimes and sometimes I feel the best client is the client who discloses everything to you. Sometimes people don't disclose कि नहीं नहीं मैंने तो करा ही नहीं, मैंने तो करा ही नहीं. I have a client who, when I had met him, he never used to say कि अरे कुछ नहीं करा. Then he started नहीं इतनी यहाँ तो मैं मिला था, ये था वो था. So it is best कि they disclose everything so that the lawyer can defend you easily. वो कहते हैं ना डॉक्टर और लॉयर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए. right. That is absolutely correct. right. Okay. So जैसे आपने बोला कि रिसर्च वगैरह के लिए, जैसे जॉली एलएलबी में हमने देखा था कि लॉयर्स जो है वो पर्टिकुलर लॉयर जगह जगह जाके एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है, सारी रिसर्च कर रहा है. तो रियल लाइफ में क्या होता है, लॉयर्स इतनी रिसर्च करते हैं या फिर कोई रिसर्च की टीम होती है स्पेसिफिक जो ये करती है फिर? See, lawyers do research also. They have teams also. हम्म. But Jolly LLB was a little आगे बहुत एग्जैजरेटेड. ज्यादा exaggerated. Exactly. उसमें तो PILB डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल दी थी. तो लॉयर्स कम्युनिटी तो बहुत हंसी होगी कि भाई क्या कर रहे हो. Obviously. ओके. राइट. कोई सेलिब्रिटीज के केस लड़े हैं आपने? Yeah. I don't want to name them, but yes. ओके. ठीक है. Again, a very sensitive topic. You can refrain from answering it. लॉ में नेपोटिज्म होता है, आई हैव हर्ड. आपका क्या कहना है इसमें एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? It's not only in law, it's everywhere. Nepotism is everywhere. Name a field where nepotism is not there. Some amount of nepotism is in law also, it's everywhere. There is no field, be it politics, be it anywhere it be. Nepotism is everywhere. राइट. बट ऐसा बोला जाता है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मैंने कहीं सुना ही है, आई हैव ओवरहर्ड दिस थिंग कि अपने इंडिया में ना like 5 to 6 families ही हैं जो पूरा जुडिशरी सिस्टम संभाल रही हैं because there is so much nepotism there. Is it correct? Is it I don't right? feel that. I don't feel that. Okay, right. So आज अगर at this stage with 10 years of experience to your credit, if you would have met 19-year-old or 18-year-old चिराग, तो आप उसको क्या एडवाइस देते एट दिस पॉइंट कि लॉ में करियर बनाने के लिए क्या एडवाइस देते? Be patient. That's it. And be patient and less temperamental. Okay. Why be less temperamental? No, because see, I have learned this key in this profession you can't be temperament because you meet people in your temperament or heat of the moment you say something, then you regret that. See, when you are 19 years old, 20 years old, you are young blood. You don't think before doing anything. You just do it in the heat of the moment. वो जोश होता है. So that calmness and everything should be there. I would have advised myself वो calmness रखो कि अपने आप को थोड़ा calm रखो, compose रखो, and just concentrate. Everything will go all right.
That you get with maturity. That is why. And Absolutely. if I could give that experience back, if I could go back to being 19 and take this experience, I would love to go back. And Oh, then things would have been different. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डिफरेंट. वो मिस्टेक्स करने का ना, जो जो मिस्टेक्स आपने करी होती हैं, सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि हाँ ये मैं नहीं करूंगा ऑब्वियसली. राइट. थोड़ा सा अगर अर्निंग पोटेंशियल के बारे में हम बात करते हैं, जैसे आपने मुझे बताया देयर इज लाइक कॉर्पोरेट, राइट, देयर इज चेम्बर, लिटिगेशन चेम्बर्स. तो हर एक फील्ड का आप एक अर्निंग पोटेंशियल फॉर अ फ्रेशर अगर बता पाए तो, like See, starting there with is no hmm, there is no cap, or there is no minimum or maximum limit. It all depends. Corporate में आप to which firm you go, or where you join. mm-hmm, Similarly, in litigation. In litigation, if you join somebody who has just started his practice some time ago, he'll not be able to pay you. okay, He will not be able to pay you much because he's trying to earn himself right now. right, If you join a senior, so obviously there will be a huge gap. hmm, Probably a person working in somebody's chamber, highest must be the minimum in a senior's office. So hmm, there is no cap, or there is no this limit to it. hmm. And even otherwise also, there is no limit in earning in the profession of law. बट स्टिल अगर आप एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबको जानना रहता है यार मैं कितना पैसा कमा लूंगा, एक बॉल पार्क फिगर अगर आप दे पाए कॉर्पोरेट में भी और लिटिगेशन में भी, अगर कोई जाना चाहता है तो. See, if you join a good chamber and all, so हाँ. I think you can easily earn 35,000 a month. ओके. And corporate is also somewhat thereby only 30,000, 40,000. But yeah, corporate में थोड़ा secure ज़्यादा रहता है, क्योंकि because litigation में then you have to start your own practice and everything later on. हम्म. So sense of security in corporate is more. हम्म. हाँ, और उसमें मतलब आपकी चेम्बर में इट्स मोर चैलेंजिंग ऑल्सो, राइट. हाँ, chamber is more challenging, but you get a lot of exposure and all. हम्म. See, ultimately, corporate में you are already there is a company which is going on, or a big firm which is going on. You can climb up the hierarchy. In a chamber sometimes you feel कि नहीं यार, now I have to work with some other senior, or I have to start my own work. Then you start from scratch again, हम्म. and you take that experience with you. राइट. And chamber में I see corporate also there are long working hours, but chamber में sometimes Sundays are also working. For example, I worked till 4 o'clock in the morning, then got up again and back to got up again 8 o'clock. You leave, then again to court and all. हम्म. So in my experience, like in litigation, there are no working hours also. Right. I think that's the like bittersweet truth of litigation and law as a field कि काफी challenging तो है, especially initial years बहुत challenging हो सकते हैं. 3-4 years are very challenging. First 3 to 4 years. That is why I told you calm, composed, थोड़ा Hmm. कम temperament होना चाहिए. Because Right. then at that point of time you get frustrated. Hmm. Frustration. See, to get new clients also, to get clients in the beginning also is very difficult. Hmm. Recently one of my juniors said कि सर मेरे को कोई केस देता ही नहीं, कुछ ही मैंने I asked him one thing. मैंने कहा listen, if today you personally have a case, Hmm. will it give you are something, you are accused of something, or some kind of civil litigation, will Hmm. you engage a lawyer of your own class Hmm. who was a colleague? कहता नहीं. मैंने कहा क्यों? कहता सर उसको एक्सपीरियंस नहीं. मैं कहा देयर इज द आंसर. मैं कहा Hmm. जब तू खुद नहीं करेगा, you yourself are not going to engage your friend for Hmm. your own case, Hmm. then how would you expect a third person to come and engage you? So Hmm. those 3-4 years are very frustrating. So Hmm. that is the difficult part. 4 years is a very difficult first 4 years. Right. वो एक मीम भी चलता है ना, जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए. इट्स अ डाइकोटमी. Right, absolutely right. तो फिर कैसे You can एक्सपीरियंस कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी किटी में? see experience. That is why I told you कि work with when you start interning. हम्म. Internship से आपको experience मिलता है. See, if you will make two freshers sit, and one who has interned at 10 places, one who has not done anything,
You will yourself feel the difference when you talk to them. आप उनको अपना केस बताओगे तो खुद डिफरेंस पता चलेगा. The way the person who has done 10 internship will handle you or give you a solution, and the way that person who has not done anything. So that is the whole experience. जब आप किसी चेम्बर में जाओगे, एक्सपीरियंस लोगे, तो यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर कि वो कैसे बात कर रहे हैं, हाउ इज ही हैंडलिंग द क्लाइंट. सी, ह्यूमन नेचर है. इफ इट इज योर केस, यू वांट टू कि मेरे को जीतना है केस. सो हाउ डज दैट लॉयर टेल यू विदाउट टेलिंग यू कि मतलब इट इज नॉट अ फिट केस टू विन. वो भी एक चैलेंज होता है टू टेल द क्लाइंट कि आपका केस जीतने वाला केस नहीं है. यू कॉम्प्रोमाइज और यू डू दिस और दिस शुड बी डन. दैट यू विल लर्न फ्रॉम देयर इफ यू गो टू डिफरेंट फॉरम्स. If you have a senior who, if you join, that is why I said if you join 5 office different offices over a span, so हर ऑफिस का आपको एक नया अलग चीज सीखने को मिलेगी. Whatever you like, you adapt in your life. I did that only. जो मेरे को अच्छा लगा वो start adapting that. वो आपको लगा कि नहीं this is the problem, या किसी ऑफिस में आपको कोई चीज पसंद नहीं, तो आप जब आप अपना ऑफिस खोलोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे, उसको उस चीज को मत करना कभी. राइट. तो कितने एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, सिंस यू हैव योर ओन प्रैक्टिस, राइट? See, I have my own practice, but to start, I feel there are people now I know who are starting immediately after graduation. नहीं, हमें किसी के पास काम नहीं करना. I know such people. Okay. There are people who start after 7 years, 6 years. Though you cannot define that, but I think after 5 or 6 years is a good enough period to learn, and then you can start your own practice, or at least start taking your own cases so that you have that much experience. You can handle things because somebody's life is in your hands. बट ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि ग्रेजुएट ही किया और एकदम से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, राइट? हाँ, you should work under somebody. I have seen people like they are working 6 months old graduate. हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते. That is the difference which is now coming since 2-3 years. Right. Okay. So I think काफी डिस्कशन हो गया है हमारा लॉ फील्ड को लेके, and how you are not a criminal lawyer, but you're a lawyer who practice on the criminal side of things. Criminal side. My basics are pretty much clear now, so thank you for that. So before we end the podcast, I have this curious candid round in which I'm going to ask a few rapid fire questions, and you have to quickly answer them. So are you ready? Yeah, please shoot. So, books or podcast? Books. Okay. Most memorable courtroom moment? Most memorable courtroom moment, the first day when I went with Ram sir. Okay. To court. The most challenging case you've ever taken? Most challenging case. All cases are challenging. There is nothing like which is not challenging. Right. But if you could like pinpoint कि यार ये वाले में तो एकदम दिमाग खराब हो गया था. I had a contempt case which was very challenging, but we managed to get out of it. Okay. ठीक है. If not law, what career would you have pursued? If no law, maybe I would have been in sports. Oh, okay. I think I didn't get to ask anything related to sports from you. चलो next podcast में करेंगे. So do you still play sports though? I used to. Now I don't get that much of time, but whenever I get, I try to play cricket. Or I used to work out also earlier a lot. Now that much time is not there. So sports I was a gym freak. Oh, okay. I was gym freak. I was an athlete in my school. I used to play cricket for them. So cricket ही pursue करते हैं आप sports में भी? हाँ, cricket. I love cricket. I still love cricket, though I may not have played for some time now. But yeah. Right. What is your mantra for success? My mantra for success. I don't think I'm successful right now. When I attain that, I'll surely let you know. You're being too humble. No. See, for mantra for success, I told the whole thing is dedication, hard work, and one of the most important things as a lawyer, networking.
Right. So, like this is the end of the podcast, but still networking से related अगर आप एक दो चीजें बता पाएं कि कैसे network करना चाहिए अगर आप अपने law field में हो तो fresher की तरह या फिर experience भी हो तब भी. See, experience, so and you should socialize, meet new people. Okay. That so that is the way to network now. मतलब socialize करो and do Social, not socialize कि मुझे कोई काम दे देंगे, but just for general I purpose. do your social, हाँ, just socialize generally. हाँ. Stay in touch with your old friends. Okay. ताकि उनका कभी कोई केस That is one फंसे of तो the most. पहले आप ही के पास आए वो. This happened with me. हाँ. I got a call from a friend after 12 years, Oh. and we were school friends. Hmm. Like we met in school and all. Hmm. So something went on Facebook, and Facebook also. I just saw his post, and Hmm. suddenly after 5 minutes, I get a call, and I got the feeling that यही call कर रहा होगा. So he called me like, हाँ. "अरे, how are you, भाई ये वो." Then I connected with him, and this like with him, he was connected to 3 or 4 old friends. Then we all connected. मैं कहा चलो तेरे केस के चक्कर में सब मिल गए. Right. एंड मतलब नंबर भी चेंज नहीं किया आपने, विच इज प्रीटी सरप्राइजिंग. 12 साल में तो नंबर चेंज रहता नहीं यूजुअली लोगों का. नहीं, नंबर चेंज नहीं करा. चलो, that's very interesting. So thank you so much, Chirag, for taking out time, and it was really a lovely, a very insightful conversation, and I hope कि जिसको भी लॉ फील्ड में जाना है उसको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे, एक ग्राउंड रियलिटी पता चलेगा कि लॉ फील्ड में एक्चुअली होता क्या है. बहुत सारी ड्रीमी चीजें सुनते हैं, इतना कमा लोगे, इतना वो कर लोगे, बट दिस वाज अ रियलिटी चेक. दिस वी वर एज ऑनेस्ट एज वी कुड बी, जितना हमें Same here, अलाउ same करता here. था. So yeah, thank you so much for this. Well, thank you so much for having me. Thank you so much. And guys, if you have any doubts, please reach out to Chirag on LinkedIn. I'm gonna link the LinkedIn ID in the description box. So reach out to him, follow him. He puts out content also. He has put up articles on Forbes also, which is pretty amazing. Do read them. And yeah, connect with him, learn from him. You'll definitely learn a lot from him. Thank you so much. Subscribe to the channel also. Bye bye.